Welcome students to our second session of our chapter number 1, that is matter in our surrounding. In our last session we have discussed about what is matter, and we have discussed about characteristics of particles of matter and the three states of matter. Okay students, now let us proceed further. That can matter change its state? What is the meaning of this topic? Can matter change its state? Means can we convert solid into liquid or liquid into gas or something like that? So yes, matter can change its state. Okay, but how can a matter change its state? So there are two parameters in this: temperature and pressure. By changing the temperature, we can change the state of matter, and by changing the pressure on the particles of matter, we can change the state of matter. तो दो पैरामीटर्स है, टेम्परेचर या प्रेशर को चेंज करके हम लोग मैटर के स्टेट को चेंज कर सकते हैं. ओके, सो वी आर स्टडीइंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर. कि टेम्परेचर को चेंज करने से किस तरह से स्टेट ऑफ मैटर चेंज होता है. तो यहाँ पर हम लोग है ना अलग अलग पहले पैरामीटर्स को लर्न कर लेते हैं. ये जो पॉइंट्स मैंने दिए ना, आई एम गोइंग टू डिफाइन ऑल दिस पॉइंट्स. ये सारे टर्म्स को मैं डिफाइन करने वाला हूँ. द फर्स्ट टर्म इज फ्यूजन. What do you mean by fusion? The process of melting, the process of changing solid into liquid. Solid को जो liquid में convert करने का जो process होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? Fusion. So what is fusion? Solid to liquid. The process of changing solid to liquid is known as fusion. Okay. Then comes melting point. What do you mean by melting point? यहाँ पे point यानी क्या? Temperature. Melting point. The temperature at which a substance कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. आप क्या करोगे? सपोज एक सॉलिड को हीट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो तुरंत ही वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा. पहले वो थोड़ी देर गर्म होगा, उसके बाद वो क्या होगा? लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा. तो वो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट. द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज नोन एज इट्स मेल्टिंग पॉइंट. So here we can study, we know that what is the melting point here now. Suppose we are taking the example of ice. The melting point of ice is 0 degree Celsius. At 0 degree Celsius, ice melts. The melting point of ice is 0 degree Celsius. Now another is vaporization. Fusion का opposite now vaporization. Now vaporization क्या? The process of converting from liquid to gas. Solid to liquid क्या था? Fusion. Now liquid to gas. तो वेपोराइजेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस इज नोन एज वेपोराइजेशन. एंड व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस. वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा. हम लिक्विड पे जब हम बॉईल करेंगे, हीट करेंगे, तो तुरंत वो वेपर में नहीं बन जाएगा. पहले वो धीरे धीरे गर्म होगा एंड दैट, और कुछ समय बाद उसमें से वेपर्स निकलना शुरू हो जाएंगे. तो वो जो टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड में से वेपर्स निकल रहे हो, उस टेम्परेचर को हम उसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं. द टेम्परेचर एट विच व्हाट लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू गैस इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट. सो व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? 100 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस. मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस is how much? 0 degree Celsius. and boiling point of water is how much? 100 degree Celsius. तो यहाँ पर हम लोगों ने चार टर्म्स पढ़ लिए. फ्यूजन मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड इनटू लिक्विड, एंड वेपोराइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू गैस. ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर. यहाँ पे हमने देख लिया, देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सॉलिड को हीट करो तो क्या हो जाएगा? लिक्विड. लिक्विड को हीट करो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस. इन द सिमिलर वे, गैस को तुम कूल करो. अगर हम गैस को कूल करते हैं तो क्या मिल जाता है? लिक्विड. और लिक्विड को कूल करो तो क्या मिलेगा आपको? सॉलिड. Okay, once again students, on heating solid we get liquid, and still on further heating liquid we get gas. Similarly, on cooling gas we get liquid, and still on further cooling liquid we get solid. Okay, now another term now, latent heat of fusion. ये सारे definitions हमको हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं. You can go through the text book also. Here I am explaining you the definitions. Okay, now another definition is latent heat of fusion. What do you mean by latent heat of fusion? So listen here. The amount of heat energy required to change the temperature of what? 1 kg to convert 1 kg solid into liquid. The amount of heat energy required to convert 1 kg solid into liquid is known as latent heat of fusion.
मतलब 1 किलो सॉलिड को किस में कन्वर्ट करना है, लिक्विड में। उसके लिए जितना हीट हमको चाहिए, जितना हीट एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Next is latent heat of vaporization. Similarly, the amount of heat energy required to convert 1 kg liquid into gas at its boiling point. 1 kg liquid को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए, that is called latent heat of vaporization. Students, once again, both these definitions are very very important. What do you mean by latent heat of fusion? Suppose you have 1 kg solid. 1 किलो सॉलिड को तुम हीट करते जा रहे हो, वो जब तक पूरा का पूरा किस में नहीं कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, 1 kg लिक्विड में। तो उसके लिए जितना हीट एनर्जी हमने दिया ना, दैट इज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और व्हाट इज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन? सपोज आपके पास 1 kg लिक्विड है, उसको हमने हीट करते करते पूरा का पूरा वेपर में, गैस में कन्वर्ट कर दिया। तो उसके लिए जितना टेम्परेचर हमको देना पड़ा, जितना हीट एनर्जी देना पड़ा, उसको हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। Now there is one another important term which you are going to study is sublimation. What do you mean by sublimation? See student, we have seen that solid liquid में convert होता है, liquid gas में convert होता है, but there are some substances which directly convert from solid to gas on heating, directly convert from solid to gas. For example, ammonium chloride. Ammonium chloride is a substance, on heating it directly converts from solid to gas. Similarly, dry ice. What is dry ice? You have studied in your lower sections. Dry ice means what? Solid carbon dioxide. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, उसको अगर आप बाहर रखोगे वो आइस की तरह ही दिखने में होगा, लेकिन बाहर जब रखोगे तो सॉलिड फॉर्म से सीधा उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, वो लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होगा। सिमिलरली कैम्फर वो फिनाइल की गोलियां जो हम लोग कैम्फर वो तो जो दिया हम लोग यूज करते हैं, वो कैम्फर। ओके, सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? सप्लीमेंटिंग सब्सटेंसेस. These substances directly turn from solid to gas and this process is known as sublimation. इसके लिए एक एक्टिविटी भी हमारे टेक्स्ट बुक में है कि सपोज हम लोग एक डिश में अमोनियम क्लोराइड लेते हैं और उसके ऊपर एक इन्वर्टेड फनल रख देते हैं और उसको ऊपर से ढक देते हैं और नीचे से डिश को हीट करो। ऑन हीटिंग धीरे धीरे अमोनियम क्लोराइड हीट हो जाएगा और वो इवापोरेट होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ओके, वो गैस बन गया तो ऊपर जाते जाते क्या होगा, फनल से टकराएगा और फनल से टकरा के वापस से क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ऑन कूलिंग इट कन्वर्ट्स फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम गैस टू सॉलिड अगेन, तो वो पूरा कूल होके क्या होगा, फनल से चिपक जाएगा। ओके, सो दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सब्लिमेशन। So once again, lastly, what do you mean by sublimation? The process in which the substances directly changes from where, from solid to gas without turning into liquid. It is called sublimation. And its opposite is deposition. When the substance turns from where, from gas to solid without turning to liquid, it is called deposition. So students, we have seen the interconversion of three states of matter. We have seen the interconversion of three states of matter. Which type of interconversion? Solid, liquid and gas. Solid को liquid में convert करो उसको बोलते हैं fusion और liquid को solid में convert करो उसको बोलते हैं solidification. When liquid turns into gas, it is known as vaporization, and when gas turns into liquid, it is known as condensation. Then another thing, when solid turns into gas, it is known as sublimation, and when gas turns into solid, it is known as deposition. It is a very important schematic diagram to show the interconversion of states of matter. Solid से liquid, liquid से gas, फिर वापस से गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, ओके, और सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड। ये सारे टर्म्स हमको याद रखने के। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम स्टूडेंट्स, यू हैव टू ड्रॉ दिस इन योर नोटबुक आल्सो। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। वी हैव टू स्टडी अबाउट द रिलेशन, वी हैव टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। ये दोनों ही टेम्परेचर को मेजर करते हैं, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है केल्विन स्केल। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? तो वी नो दैट 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन, 273.15 केल्विन। तो 0.15 बहुत छोटा वैल्यू है, इसको हम इसको छोड़ देते हैं। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। Very important formula. This is the relation between degree Celsius and Kelvin. 0 degree Celsius is equal to 273 Kelvin. Okay. Now how to convert from degree Celsius into Kelvin? अगर आपको टेम्परेचर सपोज दिए 100 डिग्री सेल्सियस,
उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो आपको 273 से ऐड करने का। तो 100 डिग्री सेल्सियस दिया तो 100 प्लस 273, तो यू विल गेट 373 केल्विन। सिमिलरली यू हैव 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 में 273 ऐड कर दो तो कितना हो गया 298 केल्विन। वंस अगेन अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना हो तो सिंपली 273 क्या कर दो, ऐड कर दो। नाउ नेक्स्ट, हाउ टू कन्वर्ट केल्विन इनटू डिग्री सेल्सियस। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया और डिग्री सेल्सियस में जाने का क्या करने का, सिंपल, इसमें से 273 माइनस कर देने का। 300 माइनस 273 इज हाउ मच, 27 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली 573 केल्विन दिया है तो 573 माइनस 273 इक्वल टू हाउ मच, 300 डिग्री सेल्सियस। सो इन शॉर्ट, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट वी हैव टू कन्वर्ट temperature from degree Celsius into Kelvin, so just add 273, and if you want to convert the temperature from Kelvin into degree Celsius, then subtract 273 from the given value. So students, in this section it is very important that I have explained you many terms. ये सारे terms का definition आपको notebook में लिखने का है, which you have to submit for your corrections. Okay, which are those terms? Fusion, melting point, vaporization, boiling point, then latent heat of fusion, latent heat of vaporization, sublimation, deposition. These are all very important terms. सबके definition आपको नोट में लिखने के, and very important schematic diagram of interconversion of states of matter, and then relation between degree Celsius and degree Kelvin. Okay. Now we will proceed with our third session in our next lecture. Till then, thank you students.